Hello, viewers. Welcome to SuperGrads. Um, all right, so what do I have for you today? Today, we'll take a look at some very good questions based on parajumbles, RC, and some vocabulary if time permits. So I guess let's just get started. Uh, all right, so a word to the wise first before I start the session. This the content that I've picked up is from Arun Sharma. It's an amazing book if you're preparing for entrance, several entrance tests. It gives you an edge, so make sure that you have worked on your basics, you have understood the concepts, and then come to this book to see your level of preparation. All right, that's what this is all about. Hi, look, hello. I guess let's just start. So we'll take a look at, we'll start with okay, let's start with the vocabulary. That's my first question for you. So one of the most important question types that you expect to see in the IPMAT paper and in several other similar papers, hey Parag, will be a question based on words that often confused. So what they do, they take a word, they use it in four different sentences, and the usage of that word is wrong in one of those sentences. You need to identify the part where the usage is wrong. That's how you get to see this sort of question in the actual paper. In IPMAT indoor paper, you can expect to see at least 4 to 5 questions based on this. So we are looking at 20 marks. So make sure that when you're preparing vocabulary, you prepare this topic essentially, because see, we are looking at 20 easy marks, okay? Very easy. So let's take a now these questions. Now, of course, Mr. Sharma has written keeping the cat level in mind. So, but then the question type may vary, but the ideology stays the same. You should know the meaning and the usage of the word. So let's take a look at the first one. So this one says, I hope the screen is visible and you're able to read with me. So this says Anita wore a beautiful brooch on the lapel of her jacket. So lapel looks like this, that we think on the jacket, on the just below your collar. So BROACH brooch actually means it's essentially a verb. It means to bring something up, to raise an issue. And BROOCH brooch is that beautiful thing that many people wear on the lapel of the jacket or on their say just below their collar, they wear it here. It's a small piece of jewelry generally worn and it's generally very beautiful too. So Anita wore brooch or brooch. Well, we've established that the word that we need here is essentially just one moment, let me get my pen. Okay, the word that I need here is option B. Now, these papers, these not just check your knowledge, they check your aptitude too. So, if my first answer is B, I guess you'll agree with me when I say that I can rule out option D here because it begins with option A. I guess that's a good enough reason. You don't have to worry about option A at all now. So, out of 5, we just have 4 options to choose from. If you want to complain, now let me write this. This means to bring up, and this one is a piece of jewelry, right? So that's what it is. If you want to complain about the amenities, the facilities in your neighborhood, please meet your counselor or counselor. Do you see? The pronunciation is the same, the spelling is different. This one says CONCILLOR, and this one says SELLOR. Well, the one that says seller, SELLOR, is actually the advisor. So you have these career counselors. So what do? They advise you, they give you advice for your career. And counselor is the member of the council. So, member of the council, counselor, and the counselor is just the advisor. Okay, so that's who he is. Now, if you want to complain about the amenities in the neighborhood, will you go to some counselor, to some advisor and say, भाई मुझे सलाह दे दो मैं क्या करूँ मेरे यहाँ पर facilities नहीं है, या आप member of the council के पास जाओगे बोलोगे भाई साहब हमने आपको जिताया था आप कुछ करके दो. I believe the answer here will be option A. Now see, BA. Okay, we are on the right track. We really didn't have to worry. BAA. यहीं पर अब हम third पे हम बहुत कुछ rule out कर पाएंगे. I would like your advice and advice. Now this one is beautiful. Advice with a C is a noun, works like a noun. So I gave you a good piece of advice. I gave you some advice when you asked for it. And I advise you works like a verb.
So we definitely need, I would like, so the verb here is like advise as in a noun. So we need A here. So I guess we can rule out option A and option B. So you're left with C and E. Okay, looks like Simar has given the right answer. I don't know. Let's see. The last scene provided the climatic. Now, climactic and climatic. Climatic means relating to the climate. So if something relates to the climate, so there is climatic change. So because of the climatic change, a lot of things have happened. Because of global warming, there have been climatic changes across the globe. So climatic is that. But what about climactic? Climactic is something that shows the climax of a book or a novel or a movie or a play or a drama. So the climax, the culmination of events is climactic. So if you're talking about the last scene, we are not probably talking about the climate, but the climactic changes. So, okay, then we have B here and A here. I guess we rule out this. So even if you don't want to check the last one, I guess we've established the answer, but let's see if we have done it right. So genes that flare and flare. Now, FLAIR, flare means your interest. So you may have flair, for something. You may have knack for something. You may have interest in something. So that's your flair. And FLARE, flair is something that widens as it goes down, like flared jeans or flared skirts. So these skirts look like this, so they flare at the bottom. So I guess it will be, and yes, we have established that the answer is option C. So good going, Simmer. Now, the next one. Prisoner's interment and interment came to an end with his early release. Now, we're talking about a prisoner, we're talking about his release. We need to understand whether it will be interment or internment. Do you see there's a difference of just one letter N in the two? Interment actually means burial, and interment means imprisonment. Now, burial and imprisonment. What are we talking about? What came to an end? His burial came to an end, his imprisonment came to an end with his release. I guess we established that it will be B, and we can rule out option B here. Now, Mr. Sharma acted in collision or collusion to transport illegal goods. Collision means accident, and collusion means conspiracy. षड्यंत्र योजना बनाना किसी के अगेंस्ट दैट्स व्हाट collusion is. So when you collude with someone, you conspire, आप कुछ प्लानिंग करते हो, स्कीम करते हो किसी के अगेंस्ट. तो इलीगल गुड्स हैं, मिस्टर शर्मा ने एक्ट किया है, तो नाटक मतलब एक्सीडेंट तो नहीं किया होगा, शायद कुछ कॉन्स्पिरेसी की होगी. तो बी. सो बी and B. We can rule out option C. Now let's see. He prefers natural lightning. Now lighting तो हमने आईपीमैट के रीसेंट पेपर में भी देखा था. लाइटिंग जिसमें एन नहीं होता, वो तो होता है जो आपका लाइट्स का अरेंजमेंट होता है, जैसे बल्ब लाइट का अरेंजमेंट है. जो भी आप दिवाली में लाइटिंग लगाते हो, वही वाला लाइटिंग, उसकी हम बात करें. सो अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. लाइटनिंग जिसमें एन ई एन लगा है, ये होता है टू रिड्यूस द बर्डन. तो आपने अपने बैग में से बुक्स हटा दिया, आपने बैग को लाइटन कर लिया, आपने स्किन क्रीम लगाई, आप गोरे हो गए, आपका स्किन कलर लाइटन हो गया. सो समथिंग दैट रिड्यूसेस डार्कनेस will lighten, something that reduces burden will lighten. So it can have two meaning. And एक lighting और होता है, NING. Do you see the E is missing here? So NING, देखो एक है lighting, LIGHTING, फिर एक है LIGHTENING और एक है LIGHTNING. There's a difference. This one is that thunder lightning. Now he prefers natural, I guess, lighting for his photography. यहाँ पर उसे कुछ हल्का तो नहीं करना होगा, right? In terms of say fairness and all. So this one is this. They heard the peeling far and wide. सुना है उन्होंने peeling of bells. एक पील होता है PEEL, पील, ये होता है छिलका निकालना. You peel the potato, you peel the banana before you eat it, right? So छिलका निकालना, to uncover, to remove the cover actually, that's peel. And PEAL, peel होता है the loud sound that you hear, because when somebody laughs or rings a bell, so you say peal of bells or peals of laughter. That's what this one is. So peal is relates to the sound. So they heard the probably the sound of the bells.
So PEEL peel will be ruled out, and you have option B. I guess we've established the answer is D here. No, I'm sorry. No, no, there is A also to choose from. So this is okay, yes, A, my bad. B will be ruled out. D will be ruled out here. Now, the students baited the instructor. अब एक bait होता है जब आप किसी को चारा लगाते हो. So you want to lure something, you use something to trap the other animal or person. तो जो चारा आप लगाते हो to catch the fish or someone, that's a bait. Bait का एक मीनिंग और भी होता है to annoy someone. तो आप किसी को तंग कर रहे हो जानबूझ के, आप उसे बेट कर रहे हो. एंड एक बेट होता है BATE बेट इट मीन्स टू रिड्यूस. सो द स्टूडेंट्स डैश द इंस्ट्रक्टर, उन्होंने रिड्यूस तो नहीं करा होगा इंस्ट्रक्टर को, तंग करा हो सकता है. So they baited the instructor, and yes, I agree with you. The answer here will be option A. Now, I guess that's, see, I am not doing a lot of vocabulary today because we've already done a session, because this is one important topic that you should prepare for preparing. I mean, if you're preparing for an entrance such as IPMAT Indore, so, and even Rohtak. So, this is a must-do topic. Mr. Sharma has some good content for you. Feel free to use it. Now, we'll take a look at para completion based questions today in this session. Now, see, before we understand how to go about dealing with para-completion based questions, let's understand what is para-completion all about in the first place. So here, what they do, they take a paragraph. So somebody has written an article, they'll pick up that article, they'll remove any one line from this article, and they'll give you 4 or 5 choices to choose from, and they'll ask you to complete this paragraph. Now, this one actually tests your logical thinking. The answers are very close. The answers they look close because they take something from the passage and then include that information in those options. And then it becomes really crucial because you need to understand what's given and how to choose the right answer. And trust me, the options look really close. Now, here, this section in particular. So, if I talk about the relevance of this section, first of all, it's a crucial section because it's there in almost all entrance tests that you can think of. At least IPMAT Indore will definitely give you a question based on this, and you can expect good 4 to 5 questions. Okay, so 4 to 5 means again we are looking at 20 marks. And if you have if you're a reader or you have good logical, say, bent of mind, this question can boost your score and get you good marks. Now let's see, just think about it. If I do this for you, I take a paragraph, I remove a line, I give you 4 to 5 options to choose from, and I ask you to complete it. Now what do you think out of the given options will go in the given information? So just think about it. There are certain things that will direct me to the answer. Number one, what is the tone of my given information? So the remaining information. So there's a part which you have to find, but the remaining information is like a clue. Look at the clue and it will lead you to the answer. So what can possibly be a clue? How can this information work like a clue for us? So let's say, let's take a look at the tone of my writing. So whatever I've written, let's say I'm very positive in my approach. I'm talking about all good things in my given information. Now, the part that is missing, think about it. Unless something really out of the way happens, the remaining information, any missing information, whether it is the first line, middle line, or the last line, do you think if everything is positive in its approach, what do you think will be um, the remaining information? Positive, negative, neutral? I believe it will be positive because the given information is positive. Now it works the same way. If whatever I've given is very negative in its approach, the missing information has to be negative unless they have given some contrasting connectors. That will always be important. If at all I've given you factual information, the remaining information is bound to be factual. Now the other things that you need to keep in mind, that the logical flow of my writing. So whatever I've given you, look at the structure, see what they have given, and try and understand how the sentences are linked. So one sentence will naturally lead to the other. So if I've written something, the next sentence will naturally support the previous one or work as an opening statement for the next one. So these are certain things that you need to keep in mind. And then last but not the least, you have to understand the scope of the given information. So whatever is the crux of the given information, the missing information is bound to be close to it because as I keep saying in the classes also, the apple doesn't fall far from the tree. So
if the passage is about apples, the answer has to be related to an apple. It cannot relate to a mango. So unrelated information, um, something that is not in sync with the given information will never be the answer. And method of elimination is one thing that will help you. So look at the given information, look at the options, rule out the obvious wrong choices. The remaining ones again match, and I'm sure you'll know how to get the answer. So some of you have already given the answers. I guess let's just take a look at them together and let's try to find the answer. So this says the stock market is probably, and then there is a blank, and the way the market has been plunging says a lot about investors' confidence. Now we're talking about stock market, which is probably something. Probably, I believe it needs some sort of noun here. Indicator of what? Indicator of what? And then they say, okay, the market has been plunging, and it talks about investors' confidence. Now, see, stock market is working as something. Now, let's take a look at the options. Best barometer to assess the sentiment of public. Now, barometer actually helps you assess. Not this, it helps you assess other things. It cannot indicate the sentiment of someone. So this will be a wrong choice here because barometer doesn't assess this. An indication of health of public sentiment. Now, health of public sentiment, think about it. The least imperfect mechanism. Well, if it is imperfect, why is it probably say, I mean, if it is imperfect, why would somebody use it to gauge anything? So, for judging the quantity of sentiment, and that too the quantity of sentiment, you cannot assess the quantity of the sentiment. The best indicator of public sentiment. Now, see, we were able to rule out option A and option C between B and D. The ideal indication of health of public sentiment and the best indicator of public sentiment. I believe, yeah, I agree with you. The answer will be option D. Let's take a look at this. So the stock market is probably the best indicator of the sentiment. And because the market is plunging, you get to know about the investors' confidence. So it's plunging, we get to know where the sentiment lies at the moment. The next one, in pursuance of the decision to resist what they saw as anti-labor policies. So, in pursuance of the decision to resist, तो कुछ भी जो एंटी लेबर पॉलिसीज उन्हें लगी हैं उसके लिए उन्होंने डिसीजन लिया है, किसने लिया है अभी हमें नहीं पता, वो रेजिस्ट कर रहे हैं एंटी लेबर पॉलिसीज, द कंपनीज एम्प्लॉय यूनियन लॉन्च्ड। अब ये दे कौन है, देयर कौन है यहाँ पर, एम्प्लॉय की यूनियन है, उन्होंने लॉन्च किया है एजिटेशन टू। ओके, तो फिर से देखो थोड़ा सा नेगेटिव है, उनको कुछ एंटी लेबर लग रहा है, कुछ डिसीजन लिए गए हैं जो उनको एंटी लेबर लग रहा है, जिसको वो रोकना चाहते हैं, रेजिस्ट करना चाहते हैं, स्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूनियन ने एजिटेशन लॉन्च किया है। अब किस लिए किया होगा, they want to show their virility. Now when you virile actually means the द डिपिक्शन ऑफ योर मैस्कुलिनिटी, आपके मैनलीनेस का डिपिक्शन है आपके, तो वो है यहाँ पर, आप वो शो करना चाहते हो। रीअफर्म द कमिटमेंट टू द कंपनी, भाई एजिटे अगर आप कमिटमेंट टू द कंपनी को रीअफर्म करना चाहते हो, बताना चाहते हो नहीं नहीं हम तो आप ही के साथ हैं, तो आप एजिटेशन क्यों लॉन्च करोगे। सो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन हो गई। ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, सो हम यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं, एंटी लेबर पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट थोड़ा सा फारफेच्ड हो गया है यहाँ पर, तो अगर डाउट है तो होल्ड पे रख लो, वी हैवंट इवैल्यूएटेड द लास्ट ऑप्शन येट। नाउ लेट्स सी, डेमोन्स्ट्रेट देयर स्ट्रेंथ। अब देखो वो एजिटेशन लॉन्च करके क्या शो करना चाहेंगे, गवर्नमेंट को गिराने के लिए या अपनी स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, थिंक अबाउट इट। तो उनको डिसीजन अच्छा नहीं लगा बिकॉज उसमें एंटी लेबर पॉलिसीज थी, हम यहाँ पे एम्प्लॉय यूनियन, एम्प्लॉयज की यूनियन की बात करने चाहते हैं, कर रहे हैं, वो एजिटेट कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज प्रॉबेबली दे वांट टू शो, अरे हम भी कुछ हैं, आप हमें हल्के में मत ले लो। सो दे डोंट वांट टू शो हाउ देयर मैस्कुलिनिटी का प्रदर्शन नहीं करना उनको, हाँ अपनी स्ट्रेंथ का करना है, हाँ हम जुड़े हुए हैं, हम एक साथ हैं, स्ट्रेंथ है हमारे अंदर। सो यस, द आंसर वुड बी ऑप्शन डी। The safest general characterization of European philosophical tradition as it has developed up to now, with all its diverse proponents, is that it consists of a dash, okay, dash Plato, to Plato, on Plato. अब देखो, so we are saying एक safest general characterization of European philosophical tradition है
कि जो उसके with all the drivers proponents, well proponent just to tell you means the person who support something. एक होते हैं opponent जो oppose करते हैं, proponent जो support करते हैं किसी भी theory को. So there are diverse proponents and um, it consists of a dash क्या series of footnotes. Now footnotes technically क्या होता है, जैसे किसी भी लेटर हेड में सबसे नीचे जो एक लाइन होती है जो हर लेटर में कॉपी होती है, जैसे जनरली कंपनी का नाम एंड ऑल राइट्स रिजर्व, कुछ भी नीचे एक सीरीज नंबर भी लिखे होते हैं कभी कभी. सो वो सब फुटनोट्स होते हैं. सो दे कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ फुटनोट्स टू, एक उनके नाम, टू प्लेटो. ओके. दे अ सीरीज ऑफ प्रोलॉग. ना प्रोलॉग होता है किसी एक सेट ऑफ एक इंट्रोडक्शन किसी भी लिटरेरी वर्क में जो होता है, जैसे किसी भी पोइट्री की बुक, पोएम की बुक उठा लो आप या कोई उठा लो, जो फर्स्ट में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा होता है वो प्रोलॉग होता है किसी भी बुक का. तो इट हैज अ सेट ऑफ प्रोलॉग्स टू प्लूटो. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी तक जो उन्होंने डेवलप किया है फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, उसमें क्या है, प्लेटो के लिए क्या लिख के दिया उन्होंने, सेट ऑफ प्रोलॉग्स बना दिए, इंट्रोडक्शन 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 इंट्रोडक्शन. ओके. कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स on Plato, and the last one is string of commentaries too. तो उन्होंने जो डेवलप किया उसमें उन्होंने कमेंट्स लिखे प्लूटो के लिए. सो कमेंट्री हियर मीन्स टिप्पणी, जो भी उन्होंने पढ़ा उसके लिए जो भी उन्होंने ओपिनियन अपना फॉर्म किया, उसकी भी उन्होंने उस ओपिनियन को, उस कमेंट्री को वहां पर लिख दिया. नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, फुटनोट्स भेजेगा क्या कोई प्लूटो के लिए? प्रोलॉग भी नहीं, प्रोलॉग्स लिखेगा कोई प्लूटो के लिए? चैप्टर्स लिख देगा भाई, वो तो ऑलरेडी डेवलप हुआ हुआ है कुछ. तो कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स ऑन प्लूटो नहीं हो सकता. हाँ, अ स्ट्रिंग ऑफ कमेंट्रीज टू प्लूटो हो सकता है. तो जो भी है उन्होंने उसको वहां पर ड्राफ्ट में डाल दिया. The next one. But when a tsunami hits Japan, an earthquake crushes Haiti, or an embassy attack leaves foreign servicemen dead, so we are talking about all negative events that are happening here. Even the most calloused. Now calloused लोग वो होते हैं जो heartless होते हैं बिल्कुल. So if I'm a callous person, I'm heartless, ruthless, I don't care about you at all. So if I could be callous if I do that. Go soft inside. तो जब इतना massive कुछ होता है तो जो बिल्कुल heartless लोग होते हैं, now we are talking about heartless tweeters here, even they go soft inside. Every laptop turns into small news service all its own. Okay, now let's see. Remaining part में क्या आ सकता है? These days, our life online has become friendly, well mannered, over sweet. हम तो एक जनरल ऐसे टाइम की बात करें जब कुछ गलत हो जाता है, तो क्या उसके बाद हम ये बोलेंगे कि these days life online becomes friendly, well mannered and over sweet? टेंस में और लॉजिकल फ्लो में डू यू थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन? आई बिलीव ये ऑप्शन रूल आउट करने लायक है. That this wasn't disaster porn but starting flood of goodwill. Now ये disaster porn नहीं है, starting flood of goodwill है. तो अगर हम सिर्फ स्वीट हो गए हैं किसी के साथ, तो क्या एक गुडविल का जेस्चर है ये? ओके, गुडविल थोड़ा सा अलग होता है. sarcasm pours down from the loftiest peaks. Now sarcasm essentially नेगेटिव होता है. जब आप किसी को टोंट करते हो तब आप sarcastic होते हो. तो आई बिलीव ये ऑप्शन तो हम रूल आउट कर सकते हैं. एट सच मोमेंट्स, कौन से मोमेंट्स? जब कुछ ऐसा होता है. इन सिंक है. द वेब बिकम्स अ नर्चरिंग एंड शाइनिंग प्लेस. तो अभी तक हम ट्विटर की जब हम बात कर रहे थे या लैपटॉप की हमने बात करी थी, लुक एट द इंफॉर्मेशन दैट्स देयर. हमने न्यूज प्रिंट की, न्यूज मीडिया की या टेलीविजन की बात नहीं करी थी, हम ऑनलाइन चीजों की बात कर रहे थे. So the web becomes a nurturing and shining place. Every stiff-jawed critic, वो calloused people, seem to want to send you forward with hugs. So I believe answer will be option A. Look at the logical flow. Look at the tone. हमने बात करी जब कुछ गलत होता है, और देखो at such moments रिलेट कर रहे हैं हम, वेब की बात कर रहे हैं और स्टिव जॉर्ड क्रिटिक्स की बात कर रहे हैं, जो कि इस समय पर क्रिटिक कौन है? जो क्रिटिसाइज करता है, लेकिन यहाँ पर हर कोई wants to share love. So the next one. On June 22nd, 2012, for these many dollars, the Mount Vernon Ladies Association purchased George Washington's personal bound copy of the Constitution with the Bill of Right and Acts of Congress. सिर्फ अब देखो, दिख रहा है कि कुछ लंबा सा है, समझ के चलेंगे बेटर होगा. तो एक एक बड़े शानदार से दिन, जून 22, 2012 को कुछ
एक एसोसिएशन ने जॉर्ज वॉशिंगटन की पर्सनल बाउंड कॉपी खरीदी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. स्टिव जॉर्ज इज यूज फिगरेटिवली हियर. जो लोग थोड़े रिजिड हैं उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. With the Bill of Rights and Acts of Congress. Now, the volume dated 1989, Washington's first year in his office as President of the US. So, ये जो इन्होंने कॉपी खरीदी ये इससे related है. In its margins, he repeatedly wrote the word president to emphasize those sections relating to his official powers and responsibilities. So, हम क्या कह रहे हैं भाई, एक एसोसिएशन ने एक पर्सनल बाउंड कॉपी खरीदी. किसकी थी वो? जॉर्ज वॉशिंगटन की थी. और ये वो टाइम था जब उनका पहला साल था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस. एंड जो मार्जिन थे, ये जो मार्जिन थे यहाँ पर उन्होंने जो भी सेक्शंस थे जो उनकी ऑफिशियल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता था, वहां उन्होंने सब जगह प्रेसिडेंट 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 लिखा हुआ था. नाउ देयर इज अ मिसिंग पार्ट. नाउ लेट्स सी. लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन डी. Washington looked forward for his first experience of combat in French and Indian War, expecting a great adventure that would put a seal on his manhood. अच्छा देखो, यहाँ पर बात हम अभी भी वॉशिंगटन की का बात कर रहे हैं. He looks forward to his experience of combat in French and Indian War. हमें जो है गिवन इंफॉर्मेशन को अगर मैं क्लू की तरह देखूं तो हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये उनका पहला साल था और जो भी सेक्शंस थे जो उनकी ऑफिशियल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे वहां उन्होंने प्रेसिडेंट वर्ड लिखा हुआ था. ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉड उसके एरिना में बात कर रहे हैं हम. नाउ लेट्स सी. सो ही लुक फॉरवर्ड टू हिज एक्सपीरियंस ऑफ कॉम्बैट. देखो रिलेटेड लग रहा है लेकिन हम कुछ अलग साइड चले गए हैं, फ्रेंच एंड इंडियन वॉर की तरफ चले गए हैं. तुम्हें डाउट है तो होल्ड पे रख लो, पिछला ऑप्शन देखते हैं. The death of his father and brother Lawrence died when George was only 20 appears to have is the right answer. I mean, this will look close, right? So, look close, right? So, let's put this one on hold. With his meticulous होता है careful. Some might say pedantic. जब हम pedantic होते हैं ना तो हम बहुत सोच समझ के ध्यान से overly concerned होके जब को सोच के चलते हैं तो हम pedantic होते हैं. Mind, he carefully measured the dimensions of the presidency as is if it were a suit of clothes. Now see, सारे options को हम एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर. Give me just one moment. Okay. Okay, not working. Anyways, let's get back to the pen. I'll change the color now. ओके. सो हमने क्या पढ़ा था कि उनको जो भी अपने से रिलेटेड सेक्शंस लगे थे वहां उन्होंने प्रेसिडेंट लिखा था. नाउ लेट्स सी. इसमें से ऑप्शन सी हम इजीली रूल आउट कर पाए थे. थर्ड ऑप्शन डी ने बोला कि ही लुक्ड फॉरवर्ड टू द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर. ये एक ऑप्शन है हमारे पास. उनकी अप्रोच टू लीडरशिप इमर्ज फ्रॉम कोड ऑफ पर्सनल कंडक्ट दैट ही बिगैन डेवलपिंग एज अ यंग मैन. ऐसा लग रहा है क्लोज है लेकिन यहाँ हम उनके अप्रोच टू लीडरशिप की बात कर रहे हैं. ओके. एंड दिस वन सेज उनका एक मेटिकुलस था और पेंडेंटिक माइंड था. वो सोच के चलते थे, अपनी चीजों को सोच के, केयरफुली देख के, समझ के, एनालाइज करके. एंड ही केयरफुली मेजर्ड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेसिडेंसी. तो उन्होंने डायमेंशन ऑफ प्रेसिडेंसी, भाई डायमेंशन क्या होता है किसी भी चीज का? यहाँ पर है एरिया ऑफ वर्क, कि भाई ये एरिया ऑफ वर्क है मेरा. तो अब देखो, अब इफ यू इवेलुएट ऑल द ऑप्शंस, ऑल्दो बी एंड डी लुक क्लोज, लेकिन ऑप्शन ए किस चीज की बात कर रहा है? उनकी अप्रोच की बात कर रहा है. और किस एरिया में बात कर रहा है कि मुझे एज अ प्रेसिडेंट मेरा एरिया ऑफ वर्क क्या क्या है. नाउ लिंक इट विद द प्रीवियस स्टेटमेंट. यहाँ हमने बोला कि उन्होंने रिपीटेडली प्रेसिडेंट लिखा था उन सेक्शंस पर जो उनकी ऑफिशियल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि उनका एरिया ऑफ वर्क था. डोंट यू थिंक ऑप्शन ए जितना क्लोज है इन मीनिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन उतना बी और डी नहीं है? I'd say option A is the only right answer here. बाकी दोनों को अब अगर हम इवेलुएट करें, उनका अप्रोच टू लीडरशिप, लीडरशिप थोड़ा ब्रॉड हो गया. लीडरशिप मे बी एज अ प्रेसिडेंट, लीडरशिप एज अ पर्सन.
उनका पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पे हमने उनकी प्रेसिडेंसी की बात नहीं करी, उनकी एरिया ऑफ वर्क की बात नहीं करी, वी आर टॉकिंग हिम ऑफ हिम एज अ लीडर। एंड देन ऑप्शन डी को भी अगर आप देखो, यहाँ हम थोड़ा सा और अलग डायरेक्शन में चले गए कि भाई आने वाले टाइम में कुछ होने वाला है, वो भी एक वॉर होने वाली है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो आई बिलीव ऑप्शन ए फिट्स द गिवन सिचुएशन perfectly. The next one. And when the words run out, there are numbers. Okay, what are we talking about? We are talking about कि भाई शब्द खत्म हो जाए तो numbers तो हैं हमारे पास. The news that physicists had found the Higgs boson. हिग्स बोसून, जस्ट टू लेट यू नो, एक फिजिक्स में एक स्मॉल पार्टिकल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है, सो इट डील्स विद फिजिक्स, इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट वी डूइंग हियर, सो इतनी इंफॉर्मेशन भी बहुत है. सो फिजिस्ट हैड फाउंड द हिग्स बोसून, कंफर्म्ड द some of the greatest intellectual work ever carried out. True, human race may not be able to resolve territorial disputes or run a stable currency bloc, but it has established why universe has a structure. So थोड़ा सा स्कैटर्ड सी इंफॉर्मेशन है, तो जब शब्द नहीं होते तो नंबर्स होते हैं. एक हिग्स बोसून हमने फाइंड आउट कर लिया, और वो हमारा एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल वर्क है. इससे जो है हम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इससे हम करेंसी ब्लॉक की सिचुएशन तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन हम ये जान पाएंगे इस हिग्स बोसून से कि यूनिवर्स एक स्ट्रक्चर है. भाई बिखरा हुआ कुछ नहीं है कि कुछ कहीं पड़ा है कुछ कहीं पड़ा है, नहीं, वी नो दैट देयर इज अ structure to the universe. So this is the given information, and then there is a blank, and they've asked you to choose the option that fits perfectly in this given blank. Now let's see. We would recognize that this at least as progress and of astonishing kind. Positive सा कुछ लिखा है. भाई यूनिवर्स का एक स्ट्रक्चर है, ये एक प्रोग्रेस है, और एस्टाउंडिंग है, भाई बड़ी बड़ी है, मतलब आप उसको सब सरप्राइजिंग है. ओके, positively surprising है. So this is what option D means. Now I don't understand much and I haven't evaluated the other options. I might as well put this one on hold. There is only one route through the crisis, much of it unpalatable to voters and hence to leaders. पहले तो palatable का मतलब समझते हैं. Palatable कोई भी चीज जो pleasant है या टेस्टी है वो पैलेटेबल है. अनपैलेटेबल उल्टा, जो टेस्टी नहीं है या जो अनप्लेजेंट है. लेकिन किसके लिए? वोटर्स के लिए और लीडर्स के लिए. हम बात कर रहे हैं कि अब देखो हिग्स बोसून एक पार्टिकल है. अब बीच का हिस्सा आप छोड़ दो कि उससे हमारी कुछ प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है. उसका लेना देना किस चीज से है? फिजिक्स से है. कि फिजिक्स से हमें क्या पता चला इस हिग्स बोसून से, या हाँ आप ऐसा बोल सकते हो. सो कि यूनिवर्स का एक स्ट्रक्चर है. ओके, हम तो उसकी बात करें, तो अचानक से वोटर्स और लीडर्स, डू यू थिंक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है क्योंकि हमने टेरिटोरियल डिस्प्यूट या करेंसी ब्लॉक की बात करी थी? आई डोंट थिंक कि कोई रिलेशन है. देखो हिग्स बोसून क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि यूनिवर्स का एक स्ट्रक्चर है, उसको आता ही यही है, उसको वोटर से और लीडर से कोई लेना देना नहीं है. सो let's cross this one. The world's worst population problems can be solved by face-to-face negotiation. अब हम तो एक अलग लेवल पे बात कर रहे हैं. जस्ट बिकॉज उन्होंने वहां पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स लिख दिया था, उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे दिया कि कोई ज्यादा फोकस कर लेगा, अरे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, उसने बोला इससे तो वो कर ही नहीं सकता, ये तो उसे आता ही नहीं है, तो फिर वो सॉल्व कैसे करेगा जब वो उसका काम ही नहीं है. अब मैं अगर इंग्लिश पढ़ाती हूँ, कोई मुझे बोले मैम आप संस्कृत पढ़ा दो या आप फ्रेंच पढ़ा दो, मैं बोलूँगी भाई मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं आता है. मुझे क्या आता है? मुझे जो आता है मैं तो वो पढ़ाऊंगी. तो हिग्स बोसून का काम यहाँ है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है. सो विल रूल दिस ऑप्शन आउट. In the Eurozone crisis, some leaders have looked property at the effects of failure. I believe इसका आंसर डी के अलावा, if you understand the given information, अगर आप क्लू को सही पकड़ लो तो इसका आंसर काफी इजीली डी है. क्यों? वो क्या कर सकता है भाई? वो हमें बता सकते हैं यूनिवर्स का एक स्ट्रक्चर है, ये तो अच्छी प्रोग्रेस है और बड़ी मजेदार प्रोग्रेस है. बाकी तीन ऑप्शन हमें वो कह रहा है कि वो कुछ कर सकता है इन टर्म्स ऑफ से मटेरियल वर्ल्ड, द थिंग्स, द प्रॉब्लम्स अराउंड अस, वो तो उन्होंने लिखा है, वो तो कर ही नहीं सकता. रेस की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता, सिर्फ ये बता सकता है कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्यों है. आई गेस दैट्स द आंसर.
द नेक्स्ट वन, लैंग्वेजेस आर एक्सट्रीमली डाइवर्स। सोच के देखो, लैंग्वेजेस डाइवर्स हैं, लैंग्वेजेस में कॉमन नहीं है, वो बहुत हैं, डाइवर्स हैं, व्हाट एल्स कैन आई से, बट दे आर नॉट आर्बिट्री। नाउ आर्बिट्री कोई भी चीज हो, जब कोई चीज आर्बिट्री होती है तो वो हम whimsical होते हैं। जब हम आर्बिट्री होते हैं, देयर इज नो राइम और रीजन, देयर इज नो लॉजिक, वी जस्ट डू व्हाट वी वांट टू डू इफ इट ऑल समथिंग इज आर्बिट्री। सो दे से डाइवर्स हैं लेकिन आर्बिट्री नहीं है कि भाई जहां से जो मर्जी उठाया रख दिया और बोला ये लैंग्वेज है। रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रीजंस हैं, लॉजिक है। Behind the bewildering, confusing, contradictory ways in which different tongues conceptualize the world, we can sometimes discern order, recognize order. Okay, G aspirant, I won't know that. Let's stick to what we have right now, okay? So let's see. So हमने किसकी बात करी? लैंग्वेजेस की बात करी जो डाइवर्स है लेकिन आर्बिट्री नहीं है। उनके पीछे बिविल्डरिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी वेज जरूर हो सकते हैं टू कॉन्सेप्चुलाइज द वर्ल्ड, वी कैन, मगर फिर भी वी कैन डिसर्न, वी कैन रिकॉग्नाइज अ पैटर्न। एक पैटर्न तो है, बिविल्डरिंग है, ये है वो है, लेकिन पैटर्न है। सो अभी तक हमने दो सेंटेंस पढ़े, दोनों लैंग्वेज के बारे में है। एक ने बोला डाइवर्स है लेकिन आर्बिट्री नहीं है, एक ने बोला बिविल्डरिंग तो है लेकिन पैटर्न भी है। नाउ सी, तो अभी तक हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है राइटर की राइटिंग में। Now, linguists have traditionally assumed that this reflects the hardwired linguistic aptitude of human brain. अब देखो, linguist कौन है? जो स्टडी करते हैं लैंग्वेज को। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ट्रेडिशनली अज्यूम करा, ये ट्रेडिशनल अजम्पशन है कि ये, इससे हमें क्या पता चलता है कि ह्यूमन ब्रेन का जो लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड है वो हमें पता चलता है, विच इज हार्ड वायर्ड, दैट इज द ट्रेडिशनल assumption given by the linguist, and kahani khatam, यहाँ उन्होंने रोक दिया। And now they put a blank here and they have asked you to get the right answer for this missing part. Now let's see, these peculiarities have been explained by linguists by reference to history of the people who speak it। बात तो हम linguist की कर रहे हैं, लेकिन ये पिक्युलैरिटी कौन सी वाली पिक्युलैरिटी? उन्होंने बोला बाय रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ द पीपल हु स्पीक इट। प्रॉबेबली देयर इज सम रिलेशन, सो लेट्स पुट दिस वन ऑन होल्ड, अभी इसे मार्क नहीं करते। यू थिंक लैंग्वेजेस वुड हैव इवॉल्व टुवर्ड्स एन ऑप्टिमल स्टेट ऑफ कंक्लूजन, but instead they accumulate quirks, the strangeness, the that hinder learning, not only for foreigners but also for native speakers। अब देखो, ऐसा लगेगा कि वो ऑप्शनल स्टेट ऑफ कंसेशन से बने हैं, इवॉल्व हुए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा क्वर्क्स है जिससे लर्निंग हिंडर होती है। सो फॉरेनर के लिए नहीं, नेटिव स्पीकर के लिए भी। अभी भी हम लैंग्वेजेस के बारे में बात करें, नहीं समझ में आ रहा, होल्ड पे रखो। लैंग्वेज हैज अ लॉजिकल जॉब टू डू। क्या है उनका लॉजिकल जॉब? convey information, and yet it is riddled with irrationality, irregular verb, random gender, silent vowels, ambiguous homophones। भाई लैंग्वेज के बारे में करें, उसके पास काम तो है, और क्या काम है उसका? कन्वे करना इंफॉर्मेशन, लेकिन उसमें बड़ी सारी चीजें जो हमें समझ नहीं आती, रिडल्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, अगेन वेरी कंफ्यूजिंग ऑप्शन। Yet scientists, recent scientific studies propose that language universals aren't simply prescribed by genes, that they arise from interaction between the biology of human perception and the bustle, exchange, negotiation of human culture। I believe the answer here will be option A। Now let's understand क्यों होगा option A एंड क्यों रूल आउट करेंगे हम बाकी की गिवन ऑप्शन। हमने बात करी लैंग्वेज की, डाइवर्स है लेकिन आर्बिट्री नहीं है, बिविल्डरिंग है लेकिन एक पैटर्न है, और उसने बोला कि ये जो ह्यूमन ब्रेन का एप्टीट्यूड है वहां से वो दिखाता है हमें, वो उसका ट्रेडिशनल अजम्पशन है। बसल, बसल होता है किसी भी चीज में मूवमेंट, आई मीन हसल एंड बसल इन द सिटी, सो इट शोज दैट। ना सी, एक हमने बात करी ट्रेडिशनल अजम्पशन की, और फिर हमने किया कॉन्ट्रास्ट। ट्रेडिशनल अजम्पशन ने क्या बोला? ह्यूमन ब्रेन की जो हार्ड वायर्ड लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड है वहां से हुआ जो भी हुआ। लेकिन साइंटिफिक स्टडी ने क्या बोला? लैंग्वेज यूनिवर्सल जो है सिर्फ जीन से नहीं होते, पीछे हमने बोला था ह्यूमन एप्टीट्यूड से हो रहा है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी। साइंटिफिक अप्रोच क्या है
कि भाई ह्यूमन जीन से सब कुछ नहीं होता, वो इंटरेक्शन से होता है। कि ह्यूमन का इंटरेक्शन, मैंने आपसे कुछ बोला, आपने किसी और से कुछ बोला, वर्ड्स इवॉल्व होते चले गए। सो बिकॉज ऑफ द परसेप्शन एंड द बसल एंड द एक्सचेंज एंड नेगोशिएशन, दो कल्चर्स का इंटरेक्शन हुआ। भाई इंडिया में ये लोग आए, वो लोग आए, वो लोग आए, इंडिया इवॉल्व होता चला गया इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। पारसीज आ गए, ये आ गए, वो आ गए, सो मेनी पीपल फ्रॉम सो मेनी कल्चर्स। लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई? बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन। नाउ सी, नाउ इफ यू टेक अ लुक एट द अदर ऑप्शंस, सो लैंग्वेज को एक लॉजिकल जॉब है। हम तो बात कर रहे थे कि वो कैसे, हम उसकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एंड इट टॉक्स अबाउट द लॉजिकल थिंग्स दैट इट हैज टू डू। नाउ यू वुड से दैट दे इवॉल्व फ्रॉम ऑप्टिमल स्टेट ऑफ कंक्लूजन, मगर वो क्वर्क्स हैं जो हिंडर करते हैं लर्निंग, नेगेटिव हो गए हम यहाँ पर। हम ऊपर बिल्कुल टोन को अगर आप देखोगे फैक्चुअल थे, ये होता है, ये होता है, ये होता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गुड एंड बैड दैट द लैंग्वेज डज और डजंट डू। Peculiarities linguists ने बनाई with reference to history of the people who speak it. कौन सी वाली peculiarities? We didn't talk about any oddities. Oddity की हमने कोई बात करी कि ये odd है, ये odd है, ये odd है? No, we didn't talk about them. And यहाँ पर देखो, अगर आप option A को लोगे, do you see the connection? एक हमने बोला traditionally, we think that. Scientifically, we think this, and again, we have some factual information. That's what makes option A a better answer choice than all other answers. Now, I told you initially that this one can be very tricky, but it can be simplified if you understand the given information and you link it with the given information, you will get the answers. How liberal democracy will emerge from this process is difficult to imagine. अब हम बात कर रहे हैं लिबरल डेमोक्रेसी की, कि वो इस प्रोसेस से कैसे निकलेगा, ये सोचना तो बड़ा मुश्किल काम है. The Syrian people, the driving force of peaceful protests, it would take a lot of time. Um, Simar, it may take some time, but it will fetch you marks also, right? Important to है. So the Syrian people driving force. अच्छा, do you see these two dashes? हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? Syrian people की बात कर रहे हैं. और ये Syrian people, ये वाला जो part है between two dashes, ये डिस्क्राइब कर रहा है सीरियन पीपल को. तो सीरियन, ये ड्राइविंग फोर्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट असद regime की बात की, किसके लिए कही हमने? ड्राइविंग फोर्स कौन है यहाँ पे? द सीरियन पीपल. सो ये वाला पार्ट इज नथिंग बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीरियन पीपल. और इसको अगर हम हटा भी देना सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, फर्क नहीं पड़ता. द नॉन एसेंशियल थिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द पास्ट. सो द सीरियन पीपल आर फेस्ड विद चॉइस बिटवीन असद्स ब्रूटल डिक्टेटरशिप. तो भाई ये सीरियन पीपल हैं, इनके लिए चॉइस है एक. ओके, लेट मी, Syrian people. Okay, my bad. Something wrong. Let me fix this. Okay, started working. Working now. Back. So Syrian people are faced with a choice. क्या choice है उनके पास? या तो वो असद का brutal dictatorship को accept करें, या फिर द यूएस स्पॉन्सर्ड इस्लामिस्ट रेबल मिलिटेंट्स, जो कि एलाई किसके साथ हुए हैं, दोस्त किसके साथ बने? मुस्लिम ब्रदरहुड डोमिनेटेड ऑपोजिशन के साथ. तो एक वो इसको चूज कर सकते हैं, नंबर वन, या फिर यूएस ने जिसको स्पॉन्सर किया है इस्लामिस्ट रेबल मिलिटेंट्स, इनके साथ एलाई करें, इनको चूज करें. ये दो चॉइसेस हैं उनके पास. इसीलिए तो शायद राइटर ने बोला हाउ लिबरल डेमोक्रेसी विल इमर्ज फ्रॉम दिस प्रोसेस इज डिफिकल्ट टू इमेजिन. भाई एक तरफ ये है और एक तरफ ये लोग हैं, किसको चूज करें? लिबरल डेमोक्रेसी इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएगी, ये राइटर का सवाल है. ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द ऑप्शंस. सो इट इज नॉट टू लेट टू रिवर्स कोर्स. ओके, कोर्स होता है रास्ता, उसको रिवर्स करने की हम बात करें.
क्या हमने पिछले सेंटेंस में बात करी किसी रास्ते की? नहीं, हमने पिछले सेंटेंस में बात करी थी दो चॉइसेस की। और ये बात कर रहा है रिवर्स कोर्स। Caught in the midst of proxy war for strategic influence, UN envoy messenger कोफी अनान्स डिप्लोमेटिक एफर्ट नेवर हैड अ चांस। अब हम यहाँ पे रिवर्स करने की बात कर रहे हैं रास्ते को। क्या हमने रास्ते की बात पीछे करी थी? अगर नहीं करी थी तो मोस्ट प्रोबेबली दिस ऑप्शन विल बी रूल्ड आउट। लेट्स टेक अ लुक एट द प्रीवियस वन। दे हैव बिकम, अब दे किसके लिए स्टैंड कर सकता है? सीरियन पीपल के लिए कर सकता है। दिस कुड बी अ गुड आंसर चॉइस। दे हैव बिकम अनविटिंग पॉन, मोहरे बन गए हैं वो ऑन द जियो पोलिटिकल चेस बोर्ड in which the principal players these are fighting a proxy war for strategic influence. दे कौन है? सीरियन पीपल। वो मोहरे बन गए हैं, क्यों? बिकॉज वो बुरी तरह फंस गए हैं। इसको चूज करें कि इसको चूज करें? मोहरे बन गए हैं। सो looks like a good answer choice. Let's put this one on hold. But just as the West Islamist gambit during the Cold War paved the way for global acceleration of Al Qaeda's operation, the implications of this ill conceived strategy will be more devastating. हमने बोला दिस इल कंसीव्ड स्ट्रैटेजी। कौन सी वाली इल कंसीव्ड स्ट्रैटेजी? क्या हमने कहीं पर भी अभी तक सी इसमें बात करी है? वी आर नॉट बॉदर्ड। यहां हमने किसी स्ट्रैटेजी की बात करी थी? नहीं करी थी। क्लू तो वो है जो ऊपर गिवन है। एंड हम यहाँ पे वेस्ट इस्लामिस्ट गैम्बिट की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमने यूएस स्पॉन्सर्ड इस्लामिस्ट रेबल मिलिटेंट्स की बात करी थी। तो कुछ एलियन टर्म्स हैं, कुछ ज्यादा एलियन टर्म्स हैं। आई बिलीव ये ऑप्शन को हम रूल आउट कर देते हैं। It is therefore far from clear that FSA represents the sentiments of serial civil society. अब ये FSA क्या है? Do we understand that? No, we don't. Now see, let's go for option C. So हमने बोला डेमोक्रेसी मुश्किल में है। क्यों है? क्योंकि सीरियन लोग दो डिफिकल्ट चॉइसेस के बीच में फंसे हैं। They have become the pawns of a geopolitical chessboard. एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, बीच में फंसे हुए सीरियन लोग। The right answer, going by the given information, is option C. The next one. New Deal efforts at soil conservation brought back the land. पॉजिटिव स्टेटमेंट है भाई, नया आपने एफर्ट डाला और आई मीन न्यू डील एफर्ट्स जो है कंजर्वेशन पे, लैंड वापस मिल गया हमें हमारा। When the rains came back in 39, the dust storm started to settle down. Farmers on the plains turned to Oglala Aquifer. Aquifer वो पार्ट होता है अर्थ का जहां पर, मतलब होता तो रॉक है लेकिन यहाँ पे पानी अक्यूमुलेट हो पाता है। दैट्स एन एक्विफर। बट यहाँ पर द ओग्लाला एक्विफर जब हम बोल रहे हैं तो सिंस ओ एंड ए इज कैपिटल, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ एन एक्विफर। The 1,74,000 square mile water table beneath them. So we're talking about a water table here to satisfy their crops needs. अब यहाँ पे their कौन है? We are talking about the farmers. So भाई they got the land back, बारिश आ गई और storm settle हो गया, उनको एक aquifer मिल गया to satisfy their crops needs. Positive, positive, positive. पूरी information positive. This is what we have talked about. Okay. Now let's see. Wells started cropping up everywhere. Some feeding crops that required more moisture than the wheat lost only a decade or two earlier. Now, अगर एक्विफर है और वेल्स मिलने शुरू हो गए तो बहुत दूर तो नहीं है हम। लेट्स पुट दिस वन ऑन होल्ड। What seemed like a good idea at that time was the beginning of a bad idea, said one timer at the close of the film. भाई हम फिल्म की बात कर रहे थे और हम पॉजिटिव और बैड आइडियाज की बात कर रहे थे? नहीं, we should rule this option out outright. At the present rate of depletion, the aquifer could at some point be pumped dry. भाई हम डिप्लीशन, अभी तो हमें मिला है और उनसे उनकी क्रॉप सेटिस्फाई होंगे। रेन, बारिश वापस आ गई है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अचानक से हम कंट्री टू द गिवन इंफॉर्मेशन क्यों जाएंगे कि वो खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा? व्हाई वुड वी डू दैट? एलिमिनेट दिस आंसर चॉइस। दिस इज नॉट इन सिंक विद द टोन ऑफ द पैसेज एज डिस्कस्ड अर्लियर। टोन को देखो, पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव है, नहीं चाहिए। इन अ रीजन विद सो लिटिल एंड अनरिलायबल रेन, इट मेड सेंस all the water they could ask for was there under their feet. Aquifer क्या होता है? जमीन के नीचे होता है। So under their feet, they are कौन? Farmers. And technology to get it was all affordable.
नाउ सी, हमने दो ऑप्शन तो इजीली रूल आउट कर लिए, बी एंड सी, बिटवीन ए एंड डी। थिंक अबाउट इट। हमने बोला उन्हें एक्विफर मिल गया उनके क्रॉप्स की नीड्स को ड्राई करने के लिए, तो वेल्स मिलने शुरू हो गए, some feeding crops that required more moisture, and then we are talking about the wheat that they lost, या फिर हमने बोला कि जितना पानी उन्हें चाहिए था वो वहां था, उनके पैरों के नीचे था। नाउ ए एंड डी, going by the logical flow of the statement, do you agree with me when I say that option D is a better answer choice? Make sense? This is in sync with the given information. This is in sync in terms of logical flow. This is in sync in terms of scope and tone of the passage. Option D is a better answer choice than option A. The next one. Vines that yield a good commercial profit. Okay, we are talking about vines that give good commercial profit. And then there is a blank, in the same limited areas of France as now. See, seem to have vines की जो गुड कमर्शियल प्रॉफिट देती हैं, सो वो प्रोड्यूस हुई है सेम लिमिटेड एरियाज ऑफ फ्रांस एज नाउ। आज की जैसी वाइन फ्रांस के लिमिटेड एरियाज में प्रोड्यूस होती है, जो जो आज होती है। सो वी आर ड्रॉइंग अ पैरेलल हियर। आई बिलीव, सी, वी कैन रूल आउट ऑप्शन बी फॉर श्योर बिकॉज वो contextually गलत है। द वर्ड semblance doesn't really make sense there. Seem to have been produced in the same limited areas. They bear a similarity in terms of production of those grown. यहाँ पर हमने पैरेलल ड्रॉ किया, वाइन्स जो फ्रांस के लिमिटेड एरियाज में होती हैं और आज होती हैं, दे बियर, सी, ऑफ दोज ग्रोन से क्या हुआ, ये वाला एंड वो वाला। इफ यू थिंक अबाउट इट दैट वेज, ओनली ऑप्शन सी विल गिव यू दैट पैरेलल स्ट्रक्चर। वाइन्स वो वाली कमर्शियल प्रॉफिट देती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन उन वाली के साथ जो लिमिटेड एरियाज ऑफ फ्रांस में प्रोड्यूस होती हैं। डू यू अंडरस्टैंड द पैरेलल स्ट्रक्चर? So that's what makes only option C the right answer here. The others look close, but they do not have that parallel structure. इसीलिए वो options rule out हो जाएंगे. Now we'll take a look at one reading comprehension passage. I want you all to read the passage with me. I'll give you a moment to go through the passage, then we'll discuss it together, and then we'll take a look at the answers together. Okay, so it's a very good passage from Mr. Sharma's book. It appeared in one of the previous year's papers also. So there will be a lot for you to learn through this passage. So I will give you a moment or two to go through it. Simple सा है, बढ़िया सा है, पढ़ो, तुम्हें मजा आएगा पढ़ के, साथ में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं. So, Simil, I hope you understand why D will not be the right answer. Okay, I think let's read it together. So, this is, when I was little, children were brought two kinds of ice cream sold from those white wagons with canopies made of silvery metal, either the 2-cent cone or 4-cent ice cream pie. 2-cent cone was small, in fact, okay, Simar, fine. It could fit comfortably into a child's hand, and it was made by taking ice cream from its container with a special scoop and piling it on the cone. Granny always suggested I eat only the part of the cone and throw away the pointed end because it had been touched by the vendor's hand, though that was the best part, nice and crunchy, and was regularly eaten in secret after the pretense of discarding it. तो राइटर अपने बचपन की बात कर रहा है जहां पर दो तरह की आइसक्रीम मिलती थी। एक होती थी 2 सेंट का कोन और दूसरी होती थी 4 सेंट की, प्रॉबेबली थोड़ी बड़ी, आइसक्रीम पाई। सो ग्रैनी बोलती थी कि जो हाथ, जिस पार्ट को वेंडर ने हाथ लगाया वो वाला मत खाओ, बाकी खा लो, बट द राइटर सेड मैं तो सारा खा जाता था।
दिखाता था फेंक रहा हूँ, but I used to eat it all. So I guess this is what the first paragraph is about. So when you read a passage, make sure that you look at it from two perspectives. Given क्या है और वो क्यों given है. क्या given है वो तो हमें समझ में आ गया. राइटर ने क्यों लिखा है फिलहाल ये बात क्लियर नहीं हुई है, उसने सिर्फ अपने बचपन का एक इंस्टेंस बताया है. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. So this says the force pie was made by a little machine, also silvery, which pressed two discs of sweet biscuit against the cylindrical section of the ice cream. First, you had to thrust your tongue into the gap between the biscuit until it touched the central nucleus of ice cream. I believe ये बात आप सब समझ पाओगे. आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम तो सब नहीं खाई होगी. Then gradually you ate the whole thing. तो पहले आप आइसक्रीम को चट करते हो, फिर आप उसका क्रंची बिस्किट को खा लेते हो. That's what the writer is telling you. The biscuit surfaces softening as they become soaked in the creamy nectar. Grammy had no advice to give here. In theory, the pies had been touched by the machine. In practice, the vendor had held them in his hand while giving them to us, but it was impossible to isolate the contaminated area. So अब उसने बताया भाई वो दिखता कैसा था और ये कैसे मजे से उसे खा जाते थे. And that's it. Now let's see. I was fascinated, however, by some of my peers, उसके साथी, whose parents brought them not a 4 cent pie but 2 cent cones. भाई उसके साथियों को 2 cent के cones मिलते थे. These privileged children advanced proudly with one cone in their right hand and one in their left. आप सोच पा रहे हो ना, एक हाथ में एक कोन, दूसरे हाथ में दूसरा कोन, and expertly moving their head from side to side, they licked first and then the other. The liturgy, this means the ritual, seemed to me so sumptuously enviable. Sumptuously, जो चीज sumptuous होती है वो luxurious होती है, वो splendid होती है. So and enviable जिसको देख के आपको jealousy होती है. तो भाई इसको मिलता था एक single 4 cent का कोन, और इसके peers को, इसके साथियों को मिलती थी 2 cent के दो कोन. वो दोनों हाथ में पकड़ते थे, एक ही साथ में, एक ही साथ में. इसको मिलता था सिर्फ एक. नाउ और वो एक चाटते चाटते जाते थे, पहले एक फिर दूसरा फिर एक फिर दूसरा. और ये रिचुअल जो था, जैसे वो खाते थे, इसको देख के बड़ी जेलसी होती थी. दैट मेनी टाइम्स आई आस्क्ड टू बी अलाउड टू सेलिब्रेट इट. इसमें मुझे भी दे दो, मैं भी दो खाऊंगा. इन वेन, जब कोई चीज इन वेन होती है तो वो फ्यूटाइल होती है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता. माई एल्डर्स वर इनफ्लेक्सिबल. अ 4 cent, yes. 2 cents, 2 cents, no. Absolutely no. As anyone can see, neither math nor economy nor dialectics, dialectic होती है related to diet, justified this refusal. So he could never understand क्यों मना कर रहे हो. ना मैथ में प्रॉब्लम है, 4 cent खर्चा कर रहे हो, 2 cent के दो ले लो. डायरेक्टिक डाइट आइसक्रीम ही है दोनों, किस लिए मना कर रहे हो, कोई उसको समझ नहीं आता था. Nor did hygiene, assuming that in due course the tip of both the cones were discarded. The pathetic, obviously mendacious, mendacious शायद एक नया word हो आपके लिए, which is not truthful. Justification was that a boy concerned with turning his eyes from one cone to the other was more inclined to stumble over the stones, steps, or cracks in the pavement. भाई इससे खाओगे उससे खाओगे, नीचे नहीं देखोगे, धड़ाम से नीचे गिर जाओगे. ये एक untruthful justification था. I dimly sensed that there was another secret justification, cruelly pedagogical. Pedagogy होता है किसी भी चीज को सिखाने से, जो टीचिंग से रिलेटेड होगा वो pedagogical होता है. तो उसको उस टाइम पर अपने बड़ों का जस्टिफिकेशन तो समझ नहीं आया, बट देन ही न्यू वन थिंग फॉर श्योर कि वो जो भी था वो सीक्रेट था और वो कुछ सिखाना चाहते थे, बट क्या उस टाइम पे वो नहीं जानता था. But I was unable to grasp it. Today, citizen and victim of consumer society, a civilization of excess and waste, which the society of 30s was not. Now, see, probably this is that secret. Are you not able to hear me, children? Can you hear me? Just give me a quick go ahead. Am I audible? I believe. Um, Kaushik is. So consumerism encourages you to buy more. It encourages you to be indulgent. It asks you to get more materialistic things. That's what it is. So he says consumer society कैसी है? Excess and waste की society है, जो 30s की society नहीं थी.
I realized that those now departed elders were right. Now he realizes जो भी वो कहते थे वो तो सही था. The 2 cent coins instead of 1 4 cent did not signify squandering. Wastefulness तो नहीं थी यहाँ पर. लेकिन क्या था? Economically speaking, but symbolically they surely did. It was this for this precise reason that I yearned for them. Two ice cream two ice cream suggested excess. This was precisely why they were denied to me, because they looked indecent, an insult to poverty, a display of fictitious privilege, a boast of wealth. तो भाई आप चार एक आइसक्रीम हाथ में लो और दो हाथ में लो. तो दो हाथ में लेने से मतलब क्या था? It was more like an insult to the poor. It showed waste not in terms of money but in terms of display of wealth. So only spoiled children ate 2 cones at once. Those children who in fairy tales were rightly punished as Pinocchio when he was rejected the skin and the stalk. And parents who encouraged this weakness appropriate to little Parvenu. Now, Parvenu is a foreign word which means somebody who gets wealth all of a sudden. So, यहाँ पर wealth क्या है? 2 cones of ice cream. Were bringing up their children in foolish theatre of I'd like but I can't. They were preparing them to turn up at the tourist class check-in with a fake Gucci bag they brought from a street peddler at on a beach at Ramini. Now peddle means to sell, peddler जो बेचता है, street peddler जो सड़क पे खड़े होके बेचता है. लाएंगे खरीद के वहां से बोलेंगे गुच्ची बैग लिया है हमने नकली का. So see now let's understand the structure of the passage. पहले राइटर ने हमें एक इंस्टेंस बताया, फिर राइटर ने कुछ हमें एक्सप्लेन करके दिया, एंड नाउ यस अपस्टार्ट इज ऑल्सो परवीनू, दैट्स राइट. नोव्यू रीच भी बोल सकते हो, अपस्टार्ट बोल सकते हो, परवीनू बोल सकते हो, दे ऑल मीन द सेम. नाउ इट इज द मोरलेस रिस्क सीमिंग एट ऑड्स विद मोरालिटी. अगर कोई चीज एट ऑड्स विद समथिंग होती है तो वो नॉट इन अग्रीमेंट होती है. तो किसी की चीज के साथ अगर आपका अग्रीमेंट नहीं है तो आप एट ऑड्स हो विद दैट थिंग. So nowadays, the moralist risk seeming at odds with morality in a world where consumer civilization wants even the adults be spoiled and promises them always something more, from a wristwatch and a pack of detergent to bonus bangle sheathed. Sheathed means covering here with the magazine it accompanies in a plastic envelope. Like the parents of those ambidextrous जो दोनों हाथों को बहुत खूबी से इस्तेमाल कर सकते हैं, gluttons, greedy people, I so envied. यहाँ पर ambidextrous glutton कौन है? वो बच्चे जिससे राइटर को चिढ़ जेलिसी होती थी बचपन में. Consumer civilization pretends to give more but actually gives for 4 cents what is worth 4 cents. You will throw away the old register radio to purchase the new one that boasts an alarm clock as well. But some inexplicable defect in the mechanism will guarantee that the radio lasts only a year. The new cheap car will have leather seats, double side mirrors, adjustable panel dashboard, but it will not last nearly as long as the glorious old Fiat 500, which even when broke down could be started again with a kick. The morality of the old days made Spartans of all of us, while today's morality wants all of us to be Cyberites. Now, see, generally, अब ये passage बहुत ही beautifully structured है. Normally, it goes the other way round. Writer सबसे पहले अपना सबसे important point बताता है, फिर वो उसे elaborate करता है, फिर वो last में एक example देता है अपनी बात को substantiate करने के लिए, exemplify करने के लिए. यहाँ पर उल्टा हो गया. राइटर ने सबसे लास्ट में अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो पुरानी टाइम की मोरालिटी थी वो हमें स्पार्टन बनाती थी. अब अगर मैं इसे लिटरल सेंस में आपको बताऊं तो स्पार्टन वो लोग थे जो स्पार्टा में रहते थे. लेकिन उन्हें हमने उनको क्यों लिया एज एन एग्जाम्पल? बिकॉज जो स्पार्टन्स थे वो बहुत ऑस्टियर, बहुत सिंपल, बहुत अच्छी लाइफ लीड कर, अच्छी एज इन दे यूज टू लीड अ वेरी they had a very strict timetable to follow. They had a very they led a life of austerity, simplicity, और बहुत कोड ऑफ कंडक्ट के साथ जीते थे. लेकिन आज की मोरालिटी हमें साइबराइट बनाना चाहती है. साइब्रिया इज अ प्लेस इन इटली, सदर्न इटली, जहाँ पर लोग सिर्फ लग्जरी में बिलीव करते हैं, खुशी में, जीने में, खाने पीने में बिलीव करते हैं. तो उस टाइम की सोसाइटी की मोरालिटी
हमें स्पार्टन बना दी थी, नहीं जितना है मिनिमलिस्ट बनो, ये कम करो कम करो कम करो। और आज की सिविलाइजेशन, आज की मोरालिटी में क्या करिए, जीने के लिए जियो, खाने के लिए जियो, इंजॉयमेंट के लिए जियो। सो देर इज अ चेंज हियर। अब इस बात को समझाने के लिए राइटर ने हमें क्या बताया, अपने बचपन का एग्जाम्पल दिया कि बचपन में उसके फ्रेंड्स, उसके पियर्स क्या खाते थे, दो आइसक्रीम खाते थे, उसको उतने ही पैसों की एक मिलती थी। उसके बड़ों ने उसे कभी रीजन नहीं बताया। लेकिन बाद में राइटर को खुद ही समझ में आया कि आज की सोसाइटी, उस टाइम के बड़े पेरेंट्स, कुछ कुछ पेरेंट्स की तरह क्या करते थे, स्क्वांडर करते थे, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट दे यूज टू शो दैट वी हैव, दे यूज टू इंसल्ट द पॉवर्टी ऑफ अ पर्सन। मगर आज की सोसाइटी क्या कर रही है, वही चीज कर रही है, दिखाती है कि मैं आपको 4 सेंट का ज्यादा दे रहा हूँ, लेकिन 4 सेंट पे 4 सेंट की जितना ही देती है, बिकॉज जो एक्स्ट्रा देती है या तो वो खराब हो जाता है, या वो टूट जाता है, या वो उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना पुराना जो भी था वो था। सो दैट इज वॉट द पैसेज इज ऑल अबाउट। Probably, if I were to put it very simply, the last line is the crux of this passage. Now, let's take a look at the questions. Which of the following cannot be inferred from the passage? क्या हम infer नहीं कर सकते passage से? ये indirect question है, अगर हमें passage समझ नहीं आया तो ये वाला आंसर हमें नहीं मिलेगा। Let's see. Today's society is more extravagant than the society of the 30s. हमें चाहिए जो हम infer नहीं कर सकते passage से। आज की सोसाइटी एक्सट्रावेगेंट है फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द 30s, क्या ये बात हमने पैसेज में कहीं देखी थी? यहाँ है, today's citizen and victim of consumer society excess and waste which the society of the 30s was not। ये तो क्लियरली गिवन है पैसेज में, तो हम इन्फर भी कर सकते हैं। सो ये हमारा आंसर नहीं है। The act of eating two ice cream cones is akin to ceremonial process। जब वो दो आइसक्रीम खाते थे वहां था ना, this liturgy seemed envious to me। तो liturgy the ritual, तो ये बात तो गिवन है हमें पैसेज में। सो नॉट द आंसर, बिकॉज हमें चाहिए जो हम इन्फर नहीं कर सकते। Elderly rightly suggested that a body turning eyes from one cone to the other was more likely to fall। उन्होंने क्या बोला था, इधर हाथ से खाओगे, इधर हाथ से खाओगे तो गिर जाओगे। ये बात बोली थी, ये भी पैसेज में लिखा है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि the pathetic and obviously the mendacious justification was, mendacious जो झूठा justification था, कि the boy concerned with turning his eyes from one corner to the other was likely to stumble over the stones। मगर उसने बोला, बड़ों ने ये बात बोली थी, लेकिन ये एक झूठा justification था, क्योंकि सही justification तो कुछ और था जो secret था। Remember? So ये चीज because of the word mendacious, ये ऑप्शन गलत स्ट्रक्चर्ड है, उन्होंने rightly नहीं बोला था, उन्होंने तो गलत बोला था। Despite seeming to promise more, the consumer civilization gives exactly what the thing is worth। ये हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, जहां उसने बोला था, so the civilization pretends to give more but actually gives for 4 cents what is worth 4 cents। so ये तो हमें given है यहाँ पर। so this option can also be inferred from the passage। हमें चाहिए जो infer नहीं कर सकते। the next one, consumer civilization attempts to spoil children and adults alike। ये बात बहुत clearly stated है passage में। so the right answer here in this case would be option C। इन द पैसेज द वर्ड लिटिल parvenu refers to, parvenu वही होते हैं जिनको अचानक से बहुत सारी वेल्थ मिल जाती है, दोज आर parvenus। नाउ लेट्स सी, लिटिल midget, midget होते हैं द short heighted people, old hag the old women, arrogant people, okay we are talking about little parvenus here, arrogant people थोड़ा ज्यादा broad हो गया, old hag भी गलत हो जाएगा। young upstart, as already discussed, parvenu and young upstart they are the same thing। we are not talking about foolish kids here, we are talking about somebody who's a parvenu, somebody who gets wealth all of a sudden, and that's what young upstart means। so option D is the only right answer here। this is contextual vocabulary। the author pined, that is longed or yearned for 2 cents cones instead of one 4 cent pie। भाई उसे पूरे बचपन में एक 4 सेंट की पाई तो मिली, लेकिन 2 सेंट की दो पाई नहीं मिली पूरे बचपन में, और उसे वो चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? It made didactic sense। Now didactic means related to diet। it suggested intemperance। intemperance मतलब indulgence। indulgence का मतलब simply speaking excess, ज्यादा, ज्यादा, दो मतलब ज्यादा, एक मतलब कम।
इट वॉज मोर फन, इट हैड अ विजुअल अपील, ही वॉज अ ग्लटन, वो ग्रीडी था, खाने का भूखा था। भाई खाने का भूखा तो नहीं था, डायक्टिक सेंस भी नहीं था। इन तीनों में से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है। नाउ व्हाई डोंट वी गो बैक एंड रीड दैट पार्ट ऑफ द पैसेज एंड फाइनलाइज द आंसर हियर, लेट्स सी। So we are here, and this says C. Okay, so this liturgy seems so sumptuously enviable that I asked to be allowed to celebrate it. तो जब उसको दूसरे बच्चों के पास दो कोन्स दिखते थे तो उसको लगता था मुझे भी चाहिए, मुझे भी दे दो, लेकिन मिलता नहीं था, राइट? 4 cent yes, 2 cents two no, right? Now there's another thing. This was for this precise reason that I yearned for them, because two ice creams suggested excess. सो अब ये देखो, ये दो पार्ट्स पढ़े हमने, ठीक है? दोनों में हमने उसको जब सामने से दो आइसक्रीम दिखती थी और इसको एक मिलती थी, उसके बारे में बात करी है। एक में बोला कि उसको लिटर्जी जो है एनविएबल लगती थी, वो रिचुअल देखने में एनविएबल लगता था कि उनको दो दे दी, मुझे एक दिया, मुझे भी दे दो। और यहाँ लिखा था मुझे भी चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्यों? क्योंकि इट शोड एक्सेस, उससे लगता था दो मतलब ज्यादा। ठीक है, बहुत क्लोज है मीनिंग में, बट यू विल गेट टू सी अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द आंसर हियर। नाउ लेट्स सी। So it suggested intemperance, that is indulgence, excess. It was fun. It had a visual appeal. Now, I hope you will agree with me when I say that only option B will be the right answer here, because उसको दो क्यों चाहिए थे? He yearned for them. He pined for them. क्यों? क्योंकि it suggested access. देखने में अच्छा नहीं था, लगता था नहीं, ये रीजन नहीं था। वो ज्यादा था, दो मतलब ज्यादा, एक मतलब कम, इसलिए उसे दो चाहिए थे। So fun and visual appeal, not the right answer. The next one. What does the author mean by nowadays the moralist seeming at odds with morality? Moralist कौन होते हैं? मॉरलिस्ट वो होगा जो मॉरल को मानता है। मॉरल क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आई अंडरस्टैंड दिस इज रॉन्ग, आई शुड नॉट डू इट, आई अंडरस्टैंड दिस इज राइट, आई शुड डू इट, आई एम अ मॉरलिस्ट। सो आई अंडरस्टैंड मॉरल वैल्यूज, आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। लेकिन आजकल के मॉरलिस्ट आर एट ऑड्स, सो नॉट इन अग्रीमेंट और इन कॉन्फ्लिक्ट। भाई आज के मॉरलिस्ट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद मोरालिटी, मोरालिटी से झगड़ा है मॉरलिस्ट का आजकल। ये लाइन बोलकर राइटर हमें क्या बताना चाहता था? लेट्स सी। द मॉरलिस्ट ऑफ यस्टरडे हैव बिकम इमोरल टुडे। भाई एक वर्ड है इमोरल, क्या मतलब होता है इसका? इमोरल वो होता है जिसे पता है कि सही और गलत में क्या फर्क है, वो गलत चूज कर लेता है, तभी तो वो इमोरल है। मुझे मालूम है कि चोरी बुरी है, मुझे मालूम है चीटिंग करना गलत है, मगर मैंने चीटिंग कर ली, मैंने चोरी कर ली, तो आई एम इमोरल। मैंने जानते बूझते गलत काम किया, आई एम इमोरल। तो जो कल के मोरलिस्ट थे वो आज इमोरल हो गए हैं, क्या राइटर ने ये हमें बोला? The concept of morality has changed over the years. भाई स्पार्टन्स से साबराइट हो गए हम, कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी चेंज हुआ है, क्या राइटर ने ये बोला? कंज्यूमरिज्म इज अमोरल। पहले तो एक वर्ड है यहाँ पर अमोरल, जिसका मतलब होता है मुझे सही और गलत का फर्क पता ही नहीं है। मॉरल जिसे सही और गलत पता है, इमोरल उसे पता है बट ही चूजेस द रॉन्ग, अमोरल जिसे फर्क नहीं पता। Okay, so lacks the moral sense is amoral. Now let's see. अब हम यहाँ पर कंज्यूमरिज्म की बात करें, क्या कंज्यूमरिज्म अमोरल है? लोगों का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर। So it's a blanket term. This option should be ruled out. Blanket terms are never the answers. The risks associated with immorality have gone up. भाई immorality से रिस्क है, क्या हमने किसी रिस्क की बात करी थी? वो भी वो जो बढ़ गए हैं ऐसे रिस्क? That's not what the writer meant anywhere in the passage. Purist view of morality is fast becoming popular. भाई प्योरिस्ट कौन है और उनका व्यू क्या है और ये पॉपुलर हो रहा है? क्या हमने कहीं भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा कुछ पढ़ा था? नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। So we have ruled out the last three options, option A or option B. Option A says moralists of yesterday have become immoral today. The concept of morality has changed over the years. राइटर ने अपने पैसेज की सबसे लास्ट लाइन में
सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी थी, द मोरालिटी ऑफ ओल्ड डेज मेड स्पार्टन्स। उसने हमें ऑस्टियर लाइफस्टाइल सिखाया था। आज की मोरालिटी ने हमें प्लेजर के लिए जीना सिखा दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी चेंज हुआ है ना। सो लेट्स गो बैक टू द आंसर एंड सी। सो आई बिलीव नॉट ऑप्शन ए बट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। हम कल के मॉरलिस्ट आज इमोरल बन गए हैं नहीं कह रहे। हमने बोला कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी बदल गया है, पहले हम स्पार्टन थे, आज हम साइबराइट हो गए हैं। दैट इज वॉट द ऑथर मीन्स बाय दिस लाइन। द नेक्स्ट वन, according to the author, justification for refusal to let him two cones was plausibly। भाई उसको जब दो कोन्स नहीं मिले थे खाने के लिए, उसका रीजन क्या था? रिमेंबर उसने बोला था इट वॉज वेरी क्लियरली स्टेटेड। सो मेंडेशियस, तो उसको ये जस्टिफिकेशन मेंडेशियस लगता था, लेकिन उसे लगता था एक सीक्रेट जस्टिफिकेशन है जो पेडागोजिकल है। पेडागोजी क्या था? रिलेटेड टू टीचिंग था। ओके, सो ये पेडागोजी से जो वर्ड राइम कर जाएगा, राइम नहीं है, आई एम सॉरी, जो सिनोनिम होगा जो इसके साथ, वो इसका सही आंसर होगा। सो डायस्टोलिक एक मेडिकल कंडीशन होती है हार्ट की, तो ये तो रूल आउट कर देंगे। डायटोनिक रिलेट्स टू नोट्स, टेकिंग नोट्स इन टर्म्स ऑफ योर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो जो नोट मेकिंग होती है रिलेट्स टू दैट। डायलेक्टिक होता है रिलेटेड टू जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। डायैक्टिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिलेट्स टू डाइट्स। एंड डाइडैक्टिक होता है रिलेटेड टू टीचिंग, मॉरल टीचिंग या प्रीचिंग। जब हम करते हैं, जब हम सिखाने के पर्पज से कुछ करते हैं, उसे डाइडैक्टिक कहते हैं। सो आई गेस द राइट आंसर बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट वोकैबुलरी विल बी ऑप्शन ए। सो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, पहले क्वेश्चन प्रॉम्प्ट्स को पढ़ लो, go back to the passage, read the first paragraph of the passage carefully. 90% cases में the first paragraph will give you the central idea of the passage. Now there can be you know some percentage, जैसे ये passage था, it was very beautifully structured, लेकिन राइटर ने उल्टा पैटर्न फॉलो किया था। उसने अपनी मेन बात लास्ट में लिखी, अन एग्जाम्पल से शुरू किया, एंड एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, नॉर्मली पहले राइटर अपनी मेन बात बोलता है, देन ही एक्सप्लेन्स इट थ्रू द एग्जाम्पल्स एंड अदर justification, elaborate करता है वो उसे। So one way or the other, you need to comprehend the given passage, and the beauty of this answers passage में ही है, वो आपकी general knowledge में नहीं है। So if you comprehend well, you will be able to get the answers right. Now, with this, I come to the end of this session. I hope you were able to gain something. If you have any comments, if you want us to take up any particular topic, do leave a comment. We'll definitely come back with the topics that you request. So I hope you will do well in your paper. These sessions will be useful, and best wishes. So on this note, I'll take your leave. Take care, stay connected. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.